दिस पर्टिकुलर पेज, ठीक है, ये जो पेज आपको दिख रहा है, सो द मोमेंट यू डबल क्लिक ऑन इट यू विल गेट टू से दिस पेज. अब this primarily this is the start page or home page of Tableau, which is mostly divided into 4 sections. ठीक है, one is your connect, followed by open, sample workbooks, and the information pertaining to training, news and upgradation. So सबसे पहले क्या होता है, I believe you guys must have seen Excel. The moment you click on, double click, let's suppose open an Excel file, it takes you to sheet level. लेकिन Tableau में ऐसा नहीं होता है. The moment you open a Tableau file, it will ask you to connect to a file. ठीक है, so that file can be a raw file, it can be an Excel file, TXT file, CSV file, any of the files, or it can be any of the servers. अब यहाँ पर Tableau, let's say if you have Tableau का desktop license version installed, so these are the software servers to which we can directly connect. इस पे करना कुछ नहीं होता है, obviously like suppose जैसे कि हमारे पास एक Gmail account होता है, right? So we have the username and password. So similarly जो भी client premises पे उनके पास let's suppose MySQL है, Oracle है, MongoDB है, जो भी होगा, so they have a primarily login credential, username, password, host, server name, वो सारी चीजें देनी होती है, and then we directly connect to any of the servers. ठीक है, and then obviously so this is primarily connected to a server, or you can connect to a static files. So static files can be Excel, CSV, TXT, any of the files. अब this is a limitation which you will find in Tableau Public. So Tableau Public में इतने सारे servers नहीं होते हैं. So having said that, if I quickly open and give you this, open this Tableau Public, so ये देखो, so यहाँ पर जब आप connect section पे जाओगे ना, तो you will get to see only very limited number of servers. So these 4 servers are there to which we can connect if we have Tableau Public वाला setup installed in our system. ठीक है, so this is one of the difference between a Tableau obviously licensed version and a Tableau Public. Since Tableau Public is free, so यहाँ पे we can connect only to these 4 servers. But primarily to connect to any of these servers, you need to have the client credentials. Then you can connect to these servers. Apart from that, with respect to a static file, the options remains more or less same. ठीक है, अब होता क्या है गाइस कि यहाँ पर so we as a developer we just need to understand कि हम अपने को we need to have a लॉगिन क्रेडेंशियल जिसके थ्रू हम सर्वर्स पे कनेक्ट कर ले. अब ये कनेक्ट होता कैसे है कि टैबलू में जो है ना प्री इंस्टॉल्ड कनेक्टर्स हैं. सो प्राइमरली टैबलू समझता है कैसा है कि जो भी टैबलू की डेवलपमेंट टीम है ना, सो दे व्हाट दे हैव डन, दे हैव एक्टिवेटेड अ स्पेसिफिक in connector for each of these SQL servers, for each of these servers. So let's suppose the moment we click on MySQL, तो backend पे क्या होता है हमें दिखेगा नहीं, backend पे MySQL का जो कनेक्टर है वो Tableau के साथ फिर वो एक्टिवेट हो जाता है, and the moment we provide a valid credential, it gets connected to the particular server. ठीक है, this is the reason. अब ये एक चीज इस पे काम कौन करती है, तो प्राइमरली Tableau डेवलपमेंट टीम. ठीक है, Tableau is a tool which is owned by Tableau INC. तो वो उन्होंने क्या किया, हर एक सर्वर्स के लिए एक स्पेसिफिक कनेक्टर जो है वो एक्टिवेट किया हुआ है. So that is how we can, using that we are obviously able to connect to any of these servers. ठीक है, now coming back, so अब यहाँ पर the open section, any questions on to the connect section? Clear है ना? ठीक है ना. ओपन इज समथिंग कि आपने जो भी लेट्स से जितने भी आपने रिसेंट जो भी अपने डैशबोर्ड्स या ग्राफ्स बनाए होंगे ना, तो यहाँ पर आपको ओपन में वो सारे दिखते हैं. सो सिंपली यू कैन डबल क्लिक एंड यू कैन गेट इट ओपन. वन वे ऑब्वियसली यू कैन गो टू फाइल, यू कैन ओपन, यू कैन ब्राउज. लेकिन टैबलू गिव्स एन ऑप्शन जहाँ पर जो भी आपके मोस्ट रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हैं जो आपने बनाए हैं, बिल्ड किए हैं, वो सारे आपको यहाँ पर दिखते हैं. ठीक है, यू कैन सिंपली डबल क्लिक ऑन इट एंड इट विल पर्टिकुलरली डैशबोर्ड और योर शीट विल गेट ओपन. सैंपल वर्कबुक्स क्या है कि टैबलू ने ये प्रोवाइड किया है फॉर सम लर्निंग पर्पस, ट्रेनिंग पर्पस के लिए, फॉर लुक एंड फील ऑफ द टैबलू, हाउ टैबलू में कैसे दिखते हैं ग्राफ्स एंड ऑल दैट. नाउ इन दिस डिस्कवर सेक्शन यू विल प्राइमरली फाइंड सम ऑफ द स्मॉल वीडियो जो कि टैबलू की टीम ने बनाया है टू लर्न, to better understand the Tableau. Resources में भी वही हैं, some documents related to Tableau, and this is primarily one of the important section. अगर हम Tableau का कोई latest version नहीं use करें, then Tableau will ask us to update to the latest version. ठीक है, so you will obviously get to see this orange color में icon में कि update वाला information. If obviously if you are using an updated version, you will not see this option. लेकिन obviously अभी जैसे मेरे पास अभी जो मैं जो वर्जन यूज कर रहा हूँ, so that is not the updated one. ठीक है, इसलिए Tableau is asking me to update to the latest version. ठीक है, so this is primarily the home page or the start page of the
Tableau. अब करना क्या होगा ऑब्वियसली, सो फर्स्ट थिंग इन Tableau इज यू हैव टू गेट योर डेटा. सो ऑब्वियसली आपके पास जो भी डेटा आएगा, यू विल हैव टू कनेक्ट योर डेटा और यू विल हैव टू ब्रिंग दैट डेटा इनटू द Tableau एनवायरनमेंट. उसके लिए हम क्या करेंगे, सो सिंपली लेट्स सपोज यू विल क्लिक ऑन दिस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और लेट मी, ठीक है, एंड लेट्स सपोज हमने यहाँ से ये वाली फाइल को, जो भी आपका फाइल है, आप सिंपली यू कैन लोकेट दैट पर्टिकुलर फाइल. आपका वो फाइल जहाँ पर भी सेव्ड है, जैसे कि मैंने बोला सैंपल सुपर स्टोर एंड ओपन. ठीक है, ये ओपन हुआ. नाउ दिस इज व्हाट इट इज. सो इफ आई क्विकली शो यू दिस सैंपल सुपर स्टोर फाइल, सो दिस फाइल इज पर्टेन्स टू अ सुपर स्टोर. ठीक है, सो ये एक सुपर स्टोर का डेटा है. यू कैन ऐसे समझ सकते हो कि दिस इज सुपर स्टोर बेस्ड इन यूएस, क्योंकि अगर हम कंट्री पे जाएंगे, दी कंट्री वैल्यू इज यूएस ओनली, यूनाइटेड स्टेट्स ओनली. ठीक है, तो और इसमें क्या है, दिस पार्टिकुलर वर्कशीट, सो दिस ऑब्वियसली द नेम ऑफ दिस वर्कशीट इज सैंपल सुपर स्टोर. इस वर्कशीट के अंदर वी हैव 3 शीट्स. वन इज द ऑर्डर शीट, वन इज द रिटर्न्स एंड वन इज द पीपल शीट. ऑर्डर शीट में क्या है कि इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू ऑर्डर्स है, कि जो भी ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं, किस कस्टमर ने कौन से डेट को ऑर्डर परचेज किया, किस दिन वो शिप हुई, शिपिंग मोड क्या था, कस्टमर आईडी क्या थी, कस्टमर का नेम क्या था. ऑल दिस लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन वी हैव फॉलोड बाय सम numerical value such as sales value, क्या है, quantity, discount and the profit. ठीक है, so this information we have in this order sheet. Return sheet में you obviously, so there are certain orders which got returned, तो वो सारी information है कि वो primarily order जो कि return हुए हैं, so that information we have in the returns वाले क्या कहते हैं, sorry, in the returns वाले sheet में. People sheet primarily describes your, just a minute. सर पीपल शीट में है कि लेट्स अज्यूम कि जो भी रीजन है, सो प्राइमरली इन द ऑर्डर शीट देयर इज अ रीजन कॉलम. ठीक है, तो हर रीजन के कौन कौन से रिस्पांसिबल पर्सन है उसका इंफॉर्मेशन है, वी हैव इन दिस रीजन वाला इन दिस रीजन वाले शीट में. ठीक है, सो दिस इज प्राइमरली द लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन वी हैव इन दी sample superstore file, which primarily has 3 sheets or 3 tabs in it. अब क्या हुआ, the moment we imported this file in this samples, let's in the Tableau environment, टैबलो में यहाँ पर 3 शीट्स दिखा रहा है, ऑर्डर्स, पीपल एंड सीट्स, बिकॉज ऑब्वियसली ये तीनों शीट हमारे वर्कबुक में अवेलेबल है. ओके, बिफोर बिफोर मूविंग अहेड, अब है कि लेट्स से अब हम यहाँ पर आ गए हैं विच इज माय डेटा सोर्स वाले इंफॉर्मेशन पे, पेज पे. नाउ इफ इवेंचुअली इफ यू वांट टू गो बैक टू योर होम पेज, सो वेरी सिंपल, और इस स्टार्ट पेज सिंपली यू सी दिस टैबलो का लोगो ना, हमें सिंपली इस पे क्लिक करना है, यू विल अगेन कम बैक टू दिस होम पेज. ठीक है, now let's say if you again want to go back to your data source wala page, you can simply click on this Tableau logo and we will come back to our data source. So primarily by we can use this Tableau क्या कहते हैं logo to toggle between the start page and the data source page. ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, so this primarily now Tableau is asking us of these all different sheets, which primarily sheet we need to use to create the graphs or to create the charts. ठीक है, सिंपल है. लेट्स सपोज फॉर नाउ सिंस वी हैव मच टू मेनी डेटा इन द ऑर्डर शीट, सो हमें क्या, हम ऑर्डर शीट को यूज करेंगे. सो यू सिंपली टेक द ऑर्डर शीट एंड ड्रैग इट हियर, जो कह रहा है ड्रैग टेबल्स हियर. द मोमेंट यू ड्रैग इट, सो नाउ इट्स गॉट, so Tableau got linked to this primarily to the order sheet of your sample superstore file. ठीक है, now see Tableau is also recommending you to go to worksheet, which is your sheet 1. ठीक है, okay, so now let's see कि हम first I simply explain just a quick recap to you कि this is the primarily the, जब भी आप Tableau open करोगे, this is how it will look like. So primarily the connect section is wherein obviously you have to connect, either you can connect to a static files, you can connect to servers. For connecting to servers you need to have valid credentials.
ओपन में द मोस्ट रिसेंट डैशबोर्ड्स और द व्यूज यू विल गेट टू सी, जो भी आपने रिसेंटली जिस पे वर्क किया है. Sample workbooks is very simple. These are some sample, let's suppose, graphs or charts which Tableau has provided to understand the look and feel and to see how dashboards or primarily graphs are being built. Discover में there are information pertaining to videos, training videos, news, and then most important is if we are not using an updated version of Tableau, Tableau will ask us to update to the latest version which is available. ठीक है. Now I simply showed how to connect to an Excel file. So simply Excel file पे click करो, you locate that file, you say click on open, then Tableau will take you to this data source वाले page पे. Since this sample superstore was having 3 files in it, orders, people and returns, so that is the reason यहाँ पे 3 sheets देख रहे हैं. We simply wanted to use order sheet. मैंने orders को यहाँ पे drag किया. Now Tableau is connected to order sheet of our sample superstore. अब इसको use करके we will obviously build our, let's suppose, views or charts. So now let's go to sheet 1. So this is how the Tableau का interface looks like. Primarily जहाँ पर हम अपने charts and graphs को बनाते हैं. ठीक है. The first section at the top is obviously your menu bar. So like other tools also, like you must have seen in Excel, Access, जो भी है Power BI में. So this is a menu bar. So primarily this has multiple ribbons in it, and each of these ribbons will have multiple, हर एक के अंदर different functionalities होंगी. So obviously during the session we will go through some of the mostly used functionalities. Second is this primarily section, इसका मैंने usage आपको बता दिया. So you can use this to toggle between your start page. So you can go back to your start page, you can come back to this particular sheet by using this Tableau button. These all are the toolbars. Toolbars क्या होते हैं? So toolbars are primarily the mostly used functionalities जो भी होते हैं किसी particular tool को, so that we are able to see in the toolbar. Now data section. So data section में क्या होगा? So primarily what does Tableau do? So eventually if you go and again if we go back to our data, so these are the, let's suppose, variables. It primarily has how many variables? Okay, so it is having 21 variables. So Tableau is smart enough. The moment we, let's suppose, import a particular file in Tableau environment, Tableau segregates the fields into your dimensions and measures. Okay. Now understand this. Dimensions are primarily your categorical variables and measures are primarily your numerical variables जिस पे हम aggregation करते हैं, like summation, sum हो गया, min, max, average. And then the variables categorical, right, which is primarily your text variable, or it can be a geographical field, or it can be a date field. So those also gets defined here. अब with respect to the data types, जो भी आप अभी ये देखो, ये चीज Tableau खुद ही अंडरस्टैंड करता है. So the moment we added the data in this Tableau environment, Tableau ने क्या किया, पहले तो उन्होंने उसने उसको dimension और measures में कर दिया. In earlier versions it used to say यहाँ पे dimensions and फिर यहाँ पे measures. अब क्या हो रहा है in the latest versions? Now it simply says tables. So tables में everything is, let's suppose, is you can understand for your understanding purpose only. Everything is dimension till you see the measure names. Measure names के बाद जो भी हैं वो सारे आपके measures हैं. Above this all are your dimensions. अब इन dimensions में ABC जिसके आगे आ रहा है, so this is primarily your text variable or your string variable. जिसके आगे ये geographical icon आ रहा है ना, globe icon, so these all are your geographical fields. ये जो calendar icon जिसके आगे आ रहा है, so these are our primarily date values. ठीक है, and then the hash are primarily your, you can say these are your numerical fields. ठीक है, so this is primarily the mostly the data type जो जिसमें हमारे variables होते हैं. So these are defined and this job is primarily done by, so there is a component which is called fast data engine. So Tableau में this component is obviously installed inbuilt. So the moment we import a data, वो क्या करता है fast data engine, it's quickly checks a sample of data for each of those variables. Let's say आपको 21 variables है, तो हर variable के cross कुछ सैंपल रोज को वो चेक करेगा और उसके बेसिस पे वो क्विकली क्या करता है, उनका डेटा टाइप्स को डिफाइन कर देता है. ठीक है, सो यहाँ पर वो चीजें हैं. एनालिटिक्स इज ऑब्वियसली समथिंग जो कि अपन आगे पढ़ेंगे, इसका क्या यूज है, कैसे यूज है. दिस इज समथिंग. अब क्या होगा कि वंस यू आर इन Tableau इंटरफेस, एट टाइम्स इट इज रिक्वायर्ड वेयर इन यू वांट टू हैव अ लुक ऑफ योर डेटा सोर्स, कि प्राइमरली आपको देखना है कि आपके डेटा सोर्स में, जो एक्चुअल डेटा सोर्स में कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, उनका क्या वैल्यूज है. So one way is obviously you can always have your raw file open, which is primarily your sample superstore file open, and then you can have a look over it. But then is there any way by means of which in Tableau we can see our data, the raw data, primarily the order sheet of my sample superstore. ठीक है, वो यही बता रहा है
We are connected to order sheet of my sample superstore. So there it is. So you simply click on this icon. The moment you click on it, it will simply show your data. So जो भी आपका जो data है ना, order sheet of a sample superstore, so you can have a glance of it in Tableau environment as well. So there's no mandate that you always need to have your raw data open. So Tableau gives you an option wherein you can see your actual data as well. Okay. Now these sections are called your shelves, SHELF, self. So this is my pages shelf, this is my filter shelf. This is called marks card. Marks card is because it contains multiple shelf, which is your color, size, text, detail, tooltip. ये सारा का usage अपन we will read. Now this is my column shelf and this is my row shelf. ठीक है, यहाँ पे तो primarily obviously this is an area wherein primarily we build our chart or view. ठीक, now show me section is something which is very important. यहाँ पर the moment you click over here, you will get to see these many charts. ठीक है, जो कि as a best practice we are being used in the visualization world. Now what is the good thing here कि हर एक चार्ट के लिए ना as you hover over आप यहाँ पर ध्यान देना. So let's suppose if I am a pie chart, so Tableau यहाँ पर already defined it. If you want to create a pie chart in Tableau, we need to have one or more dimensions and one or two measures. So this is a, let's suppose, a rule primarily. So this is the criteria which we have to fulfill if we have to build a pie chart in Tableau. If we do not fulfill this criteria, you will not see this pie chart being activated in Tableau environment. अब अगर मैं simple इस पे जाऊँ, so this is primarily a tree map. So for tree map, it's saying it's okay to have one or more dimensions, but with respect to measures, we can have only either one or two measures, not more than two measures. So if you select more than two measures, your tree map will not be activated, or you can't build a tree map in Tableau. ठीक है, सो सिमिलरली यहाँ पर क्या है, हर एक चार्ट्स के लिए जो प्री रिक्विजिट है विद रिस्पेक्ट टू डायमेंशंस एंड मेजर्स, दैट इज डिफाइंड. एंड द गुड थिंग इज द मोमेंट यू सेलेक्ट एनी ऑफ द इनपुट्स हियर, अभी देखो सारे के सारे चार्ट जो है वो डिसेबल्ड हैं. लेट सपोज करो सिंपल है, इफ आई सेलेक्ट द कैटेगरी एंड इफ आई सेलेक्ट द सेल्स, ठीक है, सो यू सी नाउ these are the chart which are enabled, the 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, क्योंकि हमने जो ये यहाँ पे जो दो इनपुट सेलेक्ट किया विद रिस्पेक्ट टू डायमेंशंस एंड मेजर्स, so primarily we are fulfilling the criteria for these charts, but still we are not fulfilling the criteria for the remaining charts, इसलिए the remaining charts are not primarily activated or invoked. ठीक है, so this is the good thing in Tableau. So at any moment of time, if you want to see कि हाँ ये जो भी मेरे variables हैं, because obviously you will have to use these variables, the dimensions and measures to create your chart. तो अगर आपको देखना हो कि हाँ इनको मैं यूज करके कौन कौन से चार्ट्स बना सकते हो, तो यू कैन ऑब्वियसली यूज शो मी सेक्शन, एंड शो मी सेक्शन इज समथिंग व्हिच इज वेरी यूजफुल एंड एवरीवन यूजेस टेक्स हेल्प ऑफ दिस वन. अब एक चीज और है गाइस कि यहाँ पर जितने भी चार्ट्स है ना, सो प्राइमरली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने चार्ट्स एक्टिवेटेड है. सो प्राइमरली वी कैन गो अहेड एंड बिल्ड एनी ऑफ दिस चार्ट्स बाय यूजिंग कैटेगरी एंड सेल्स वाला फील्ड, बट ऑलवेज यू विल गेट टू सी वन चार्ट इनसाइड योर रेड बॉक्स. So obviously if you hover over, so अब ये भी there is an inbuilt, you can say, algorithm or logic in Tableau. This is the best practice across the globe. Tableau बोल रहा है of all these possible charts, of all these 10 possible charts, bar chart is the most recommended one. ठीक है, so you will always get to see. अब let's suppose the moment I change the field here, ठीक है, if I select the order date and the profit, so you see now these are charts are being possible to make, but then Tableau is now placing a line chart inside a red box, because obviously we know the moment the date fields come, it can be quarter, month, year, day. Line chart is obviously primarily हम क्या करते हैं, हम ट्रेंड शो करते हैं, and Tableau is also recommending कि आप जाके कुछ भी बना सकते हो, कोई सा भी चार्ट, but line chart is the most recommended one based on the inputs or the variables which we have selected. ठीक है, so this is primarily the all with respect to the interface of your, how you can get connect to your raw file, and then once you connected, how does the Tableau sheet level पे information look like. Now any questions, let me know. Yes, no, कुछ तो होगा. मेरा ओके. Guys, when I ask something कि clear है कि नहीं है, you need to reply yes or no.
You may not have to be on mute. सर अभी तो नहीं है, जब प्रैक्टिस करेंगे तब पता चलेगा। तो अभी you can say no, yes or no. तो पता लगा फिर, वरना पढ़ा इधर मैं पढ़ा रहा हूँ, उधर कभी कभी होता है सेशन में लोग सो भी जाते हैं। नो सर, अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, अभी तो आ रहा है। तो मेक श्योर कि जब भी मैं कुछ पूछूं ना तो यू आइदर रिप्लाई यस और नो, ठीक है ना? अभी ओके नहीं। सर। कूल, ठीक है। सो नाउ, ठीक है, कूल है। So, अभी एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं। सो व्हाट वी आर बीइंग टोल्ड, सो आई विल जस्ट गिव इट अ नेम, आई विल गिव इट अ नेम ऑफ स्टेट, ठीक है। सो अब हम करते हैं, सो हमें एक टास्क बोला गया है। सो व्हाट वी हैव बीन टोल्ड, सो इफ वी सी आवर डेटा, ठीक है, ये समझ में आ गया। दिस डेटा इज फॉर यूएस, सो सिंपल है, दिस सैंपल सुपर स्टोर इज अ सुपर स्टोर व्हिच इज बेस्ड इन यूएस, और फिर उसके डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज एंड सिटीज हैं। हमें ये बताना है, सिंपल एक व्यू बनाना है। इफ आई गो, देयर विल बी अ स्ट्रेट कॉलम भी है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें ये बताना है, ये बोला गया कि क्रिएट अ व्यू विच विल शोकेस as per your data which is available in your order sheet of a sample superstore, which or what is the profit across different states and which state is having the maximum profit and which state is having the minimum profit. So हमें एक व्यू बनाना है जिससे obviously profit across different states पता चल जाए, and then what is the who which state is having the maximum profit and which state is having the minimum profit, वो भी पता चल जाए. I hope the problem statement is clear, right? प्रॉब्लम क्लियर है ना सबको? ठीक है। अब यस सर। वन थिंग ऑलवेज रिमेंबर कि टैबलू में होता क्या है, द नेम ऑफ द शीट, जो भी आप नेम ऑफ द शीट दोगे ना, सो दैट गेट्स एडेड बाय डिफॉल्ट एज योर हेडर ऑफ योर डैशबोर्ड और लेट्स सपोज योर चार्ट। बट देन ऑब्वियसली देयर इज अ वे बाय मींस ऑफ व्हिच वी कैन ऑब्वियसली एडिट इट, जो कि अपन आगे करेंगे। लेकिन हाँ, बाय डिफॉल्ट ये होता है कि जो भी आप शीट का नेम दोगे, सो दिस नेम गेट्स एडेड एज योर हेडर ऑफ योर डैशबोर्ड और योर चार्ट, ठीक है। ओके, सो अब हम ये चीज कैसे करेंगे? सो जहां पर हमें ये बोला गया कि create a view which will showcase which all what is the profit across different states of US and which state is having the maximum profit, which state is having the maximum minimum profit. So very simple, हम सबसे पहले क्या करेंगे, you will take your country field and you will drag it onto the यहाँ पे इस वाले एरिया में, ठीक। now always remember guys, जब भी हम कोई टैबलू में व्यू क्रिएट करते हैं ना, वेयर इन दी लेट्स सपोज फील्ड्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, सो प्राइमरली अब क्या होगा, यू कैन गो अहेड एंड हैव कंट्री सॉरी स्टेट डायरेक्टली, लेकिन अब ऐसा होता है ना कि इट कैन हैव एनोमलीज बिकॉज अक्रॉस द ग्लोब देयर आर सर्टेन स्टेट्स विच आर बीइंग मैप्ड टू डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। इसलिए वी ऑलवेज फॉलो अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, कि अगर मुझे स्टेट यूज करना है तो पहले हम कंट्री को यूज करेंगे, बिकॉज इन टैबलू एक सेशन में आपको मैं ले जाऊंगा, मैप्स इज समथिंग विच इज ऑलरेडी इंटरफेस्ड। सो देखो, हमने जैसे ही कंट्री यहाँ पे डाला, एंड सिंस कंट्री इज हैविंग योर यूनाइटेड स्टेट्स, कंट्री आपको जो डेटा है इसमें यूएस है, तो अगर आप देखो तो यहाँ पे यूएस का मैप जो है एक्टिवेट हो गया इन टैबलू, ठीक है। सो इसीलिए ऑलवेज रिमेंबर टू यूज अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिटवीन द सर्टेन फील्ड्स, प्राइमरली इन द केस ऑफ ज्योग्राफिकल फील्ड्स। ये क्लियर हुआ? एंड द गुड थिंग इज टैबलू इज कि अब जैसे कि मान लो हम ये काम करते थे, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, कि अगर एक्सेल में करते तो पाइवट टेबल जब बनाते हैं तो जब हम कंट्री को डालेंगे तो यूनिक वैल्यूज आती है। सिमिलरली टैबलू क्या करता है, द मोमेंट यू टेक एनी ऑफ द डायमेंशंस, ठीक है, जब ऑलवेज रिमेंबर डायमेंशंस को जब भी लोगे तो उस फील्ड के अक्रॉस जो भी यूनिक वैल्यूज होंगी वो टैबलू बस उन्हीं यूनिक वैल्यूज को कंसिडर करता है। सो प्राइमरली टैबलू एग्रीगेट्स योर वैल्यूज अक्रॉस यूनिक वैल्यूज। सो सिंस अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर हम डेटा पे जाएं, इट वाज ओनली हैविंग वन रो और इसमें यूनाइटेड स्टेट्स का डेटा था, इट इज हैविंग मल्टीपल रोज व्हिच इज 9994 रोज, बट देन सिंस यूनाइटेड स्टेट्स सी ओनली यूनिक वैल्यू, सो दैट इज द रीजन इट्स गिविंग यू यूनिक वैल्यू। सिंपल है कि टैबलू ऑलवेज एग्रीगेट्स द वैल्यू एट यूनिक लेवल, ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना है, वी वांट टू शोकेस यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कितने कितने स्टेट्स है एज पर योर डेटा। सिंपल हम क्या करेंगे, यू विल टेक द स्टेट एंड ड्रैग इट ऑन टू द एरिया अगेन, ठीक है। सब ये देखियो, नाउ टैबलो इज as per the tableau, so there are 49 states in your data और 49 states का डेटा है in the orders sheet of my sample superstore। अब ये 49 में कैसे बोल रहा हूँ क्विकली,
सो सबसे पहले ऑब्वियसली ये गिनेंगे तो नहीं बैठ के, सो सिंपल है, इन टैब्लू व्हेनेवर यू विल यू क्रिएट एनी व्यू ऑलवेज टेक अ लुक ऑन टू दिस वन विच सेज 49 मार्क्स, ठीक है। सो दिस प्राइमरली ये क्या बताता है कि जो भी हमने लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन, सो प्राइमरली हमने कंट्री और स्टेट यूज किया, ऑब्वियसली कंट्री तो यूनाइटेड स्टेट्स ही, स्टेट अब हम ऐड कर रहे हैं इसमें। सो प्राइमरली इट मीन 49 मार्क्स मीन्स कि देयर आर 49 यूनिक वैल्यूज और 49 यूनिक स्टेट्स इन माई डेटा, ठीक है। इसलिए सो कुछ भी होगा अभी आगे भी करेंगे, सो जो भी आप फील्ड जैसे जैसे बढ़ाओगे, सो बेसिस दैट जो भी आपका सबसे एक्सपैंडेड फील्ड होगा उसकी बेसिस पर टैबलू आपको टोटल नंबर ऑफ यूनिक डेटा पॉइंट्स बताता है यहाँ पे, ठीक है। इफ यू वांट टू क्रॉस वैलिडेट, यू कैन सिंपली क्रॉस वैलिडेट, सिंपली ओपन दिस सैंपल सुपरस्टोर फाइल। Now let's suppose if I want to do this validation, so हम सिंपल क्या करेंगे, यू कॉपी दिस, ठीक है। हम एक नई सीट पे जाते हैं, यू गो टू डेटा एंड देन यू से रिमूव डुप्लीकेट्स, ठीक है। रिमूव डुप्लीकेट्स मैंने किया, ओके किया, इफ यू सी इफ यू काउंट दिस वैल्यू विल बी 49 ओनली, ठीक है। सो यही है, बट ठीक है, अपने को जब हम टैबलू में काम करते हैं एट टाइम्स वी हैव टू वैलिडेट, बट हाँ दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम इफ यू वांट टू सी हाउ मेनी यूनिक डेटा पॉइंट्स आर देयर, सिंपली सी दिस, ये वाला जो ऑप्शन यहाँ पर आता है उससे। अब हमें इसमें क्या करना है, सो ओके, सो वी हैव द यूनाइटेड स्टेट्स एंड प्राइमरली अक्रॉस यूनाइटेड स्टेट्स व्हिच आर डिफरेंट sorry country and which are across United States which are different states are there, so that level of information we have, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या शोकेस करना है, व्हाट इज दी प्रॉफिट वैल्यू अक्रॉस ईच ऑफ दिस डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है ना। उसके लिए अपन मैक्सिमम मिनिमम भी चाहिए ना, सॉरी मैक्सिमम मिनिमम भी तो निकालना है इसमें, कहाँ पे सी मैक्सिमम भी आते हैं अभिनव, एक मिनट, हाँ ठीक है। सो अभी हमें क्या करना है, प्राइमरली वी हैव टू शोकेस द प्रॉफिट वैल्यू अक्रॉस ईच ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली टेक द प्रॉफिट एंड ऐड इट ऑनटू द, लेट्स सपोज वी ऐड इट ऑनटू द लेबल, ठीक है। सो द मोमेंट यू ऐड इट ऑनटू द लेबल, सो लेबल प्राइमरली क्या होता है, एज वी यूज इन द ग्राफ्स, ठीक है ना, कि प्राइमरली आप उसकी एक वैल्यू को ऐड कर रहे हो। सो नाउ इट इज शोइंग यू द टोटल ऑफ योर profit value across these different states. Now good thing is Tableau is always remember, जब आप dimension को use करोगे it will always aggregate your value at the unique level. So primarily अगर यहाँ पे कैलिफोर्निया दिखा रहा है, if we go to our data, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कैलिफोर्निया का एक ही डेटा था, so obviously there will be duplicates. If you see इतने सारे duplicates थे, लेकिन Tableau always considers a unique value, इसलिए उसने कैलिफोर्निया का एक ही डेटा पॉइंट लिया। So that is the reason हम quickly बता सकते हैं कि there are 49 total states in my value, sorry states in my data. Now अब how does Tableau behaves in case of measures? तो अभी जैसे हमने measure मतलब your numerical fields, ठीक है, जिसपे आप aggregation करते हो, it always does the summation. अब ये क्या कर रहा है, जब मोमेंट मैंने इसको प्रॉफिट को लेवल पे ऐड किया ना, सो इट इज डूइंग द समेशन। ऑब्वियसली इस अगर आप कैलिफोर्निया वाली अपने डेटा पे जाओगे, कैलिफोर्निया को फिल्टर करोगे, सो योर वैल्यू विल कम टू 76K ही। इफ यू गो एंड देन यू नेवर आउट, इट विल कम टू समथिंग अराउंड 3.3K. So the dimensions, Tableau consider unique values. For your measures, Tableau does this aggregation by sum, ठीक है। Now how to be show them differently, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, सब एक जैसे ही दिख रहे हैं, सबका मुझे दिख रहा है, लेकिन दिस विजुअलाइजेशन को देख के ये पता नहीं चल पा रहा है, जो मैंने बोल रहा था कि which state is having the maximum profit, which state is having the minimum profit. हाँ मैं देख के ये बता सकता हूँ कि जो दिख रहा है कि कैलिफोर्निया का 76K which is the highest and some, so primarily I believe minus. So Texas is something जो मुझे समझ में आ रहा है कि is having the least profitable state of all these states which we have in our data. लेकिन how to make it more impactful is very simple. You take the profit and add it onto the color shelf. तो समझना. So now you see the moment you added profit onto the color shelf, so now each of your states is having different colors. It's denoted by your different colors. उसमें क्या है, Tableau is saying कि जहाँ पर सबसे dark, let's suppose amber color है, so that particular state will be the state which will have the least profit, which is minus 25K, and the state which is the सबसे ज़्यादा dark bluish होगा with the value 76K, it will be the state with the maximum profit. So obviously if you see इस पूरे chart में this one is the state which is having the सबसे ज़्यादा amberish लग रहा है, and the value is obviously matching as per this particular range, which is minus 25K, and then here 76K, which is this one. So obviously quickly हम बता सकते हैं with this view कि of all these 49 states, unique states available in my data, California is the one which is having the maximum profit of 76K, and Texas is the one which is having the least profit, that is minus 25K. और ये हमने बनाया कैसे, सिंपल,
इन फील्ड्स को डिफरेंट डिफरेंट जगह पे लोकेट करके। नाउ अ क्वेश्चन कैन कम टू योर माइंड कि ये हमें पता कैसे चलेगा कब किसको कहाँ पर यूज करना है। So that is obviously that we have to learn, and the more and more you practice, the more and more confidence आपको मतलब and चीजें you will get to understand. Now, having said that, is this problem statement clear? मैं क्या शांति को क्या समझो, हाँ या ना? Yes. ठीक है, कूल है। अब क्या होगा गाइस, ऑलवेज नाउ वंस यू आर डन विद दिस, लेट्स सपोज वी क्रिएटेड दिस व्यू, तो अब ऑब्वियसली हमें इसको सेव करना होगा, ठीक है। टू सेव दिस व्हाट यू विल हैव टू डू, सिंपली क्लिक ऑन दिस वन। अब देयर आर टू वेज बाय मींस ऑफ व्हिच वी कैन सेव देम। सो नाउ लेट्स सपोज इफ आई से डेस्कटॉप पे आई क्रिएट अ न्यू फोल्डर, ऐसे I give it session, ठीक है। नाउ द मोमेंट जब आप सेव करने जाओगे ना, सो Tableau विल, यू कैन सेव इट इज either TWB और वी कैन सेव इट either as TWBX। इन दोनों में फर्क क्या है वो देखते हैं, ठीक है। तो पहले मैंने इसको सेव किया TWB से, ठीक है, एंड आई से सेव, ठीक। इसको फिर से मैं कर रहा हूँ क्लिक, ठीक है, यहाँ पे फाइल पे जाके आई से सेव एज, एंड आई से सेशन में कर देता हूँ 1 और इसका साथ में मैं नेम दे देता हूँ 0505-2022, ठीक है। नाउ आई एम सेविंग इट एज TWBX, ठीक, सेव। तो एक तो वही है, जो भी आप नेम से सेव करोगे, सो दिस नेम विल गेट असाइंड टू दिस पर्टिकुलर वर्कशीट। हमने जो भी नेम दिया, टैबलो सेशन, जो भी आप नेम दोगे, ठीक है, एंड ऑलवेज वी ऑलवेज गिव इट अ नेम व्हिच इज इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, बाय अ मास लार्जर ऑडियंस। ये आप जब भी करते हो, शीट का भी नेम हम ऐसे देते हो जो कि किसी को समझ में आ जाए कि शीट में क्या हमने बनाया है, ये क्या बनाना चाह रहे हैं, एंड देन वर्कशीट का भी नाम ओवरऑल ऐसे देते हैं, यू कैन से टैबलू ट्रेनिंग सेशन, जो भी है। तो अभी मैंने दिया टैबलू सेशन 1 0505-2022। नाउ अब इससे पहले मैंने सेव किया था इसको सिंपल टैबलू सेशन 1। इफ आई गो टू माय डेस्कटॉप, ठीक है, सो आई क्रिएटेड अ फोल्डर, राइट, सो आई क्रिएटेड हियर, क्या फोल्डर मैंने क्रिएट किया था, टैबलू में मार्च, ठीक है। सो नाउ यू सी हियर हमने सेव किया था एक सेशन 1 नाम से TWB फाइल, और हमने किया था एक सेशन 1 505-2022 से TWBX फाइल। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू फाइल? तो एक तो डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा, सीइंग दिस अभी आ रहा है बेटा, सीइंग दिस आइकन्स, ठीक है। अब क्या होता है, द मोमेंट यू सेव एनी ऑफ योर, जो भी आपने डैशबोर्ड बनाया है एज अ TWB, ठीक है, टैबलू वर्कबुक, इट प्राइमरली ओनली स्टोर्स योर, क्या कहते हैं, जो भी हमने व्यू बनाया है। सो दिस पर्टिकुलर वर्कशीट को ये सेव करता है, इट डज नॉट सेव योर रॉ डेटा। सो इसमें क्या है कि बस ओनली व्यू है। सो नाउ लेट्स सपोज अगर ये हम फाइल किसी के साथ शेयर करते हैं, एंड इफ ही और सी डज नॉट हैव योर सैंपल सुपरस्टोर का ऑर्डर शीट, देन ही और सी वोंट बी एबल टू सी दिस व्यू। इसलिए इसको देखने के लिए तो टैबलू वर्कबुक है, तो टैबलू चाहिए ही, लेकिन अगर वो टैबलू में ओपन करेगा and if he or she does not have the raw file which is your order sheet of sample superstore, तो ये ओपन ही नहीं होगा, ठीक है, टैबलू विल थ्रो एन एरर। सो ये हम तभी ऑब्वियसली, अब ये चीज क्या है कि इसमें अगर आप देख ही रहे हो तो साइज का डिफरेंस है, क्योंकि इसमें बस व्यू है, लेकिन हाँ व्हेन वी आर वेरी श्योर कि हम जिसके साथ शेयर कर रहे हैं, ऑब्वियसली व्हिच हैपेंस व्हेन वी आर वर्किंग इन द सेम टीम, उसके पास वो रॉ फाइल है, देन वी सेव इट एज TWB। बट व्हेन वी आर नॉट श्योर, और हमें ये पता है कि हम जो इसके लिए बना रहे हैं, सपोज वी आर क्रिएटिंग फॉर अ क्लाइंट, फॉर अ एंड यूजर, तो उसके ऑब्वियसली रॉ फाइल मान लो नहीं होगा, तो देन यू सेव इट एज अ TWBX file, so Tableau packaged workbook. So Tableau packaged workbook is nothing, that is TWB plus your raw file. So the moment you click here and you say unpackage, ठीक है, so now let's suppose करो अब मैं यहाँ पे जाके, you will get an option which says unpackage, unpackage करोगे, so now you see it क्या होगा यहाँ पे, it takes some, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं, कुछ हो रहा है, देखो यहाँ से बन, इससे प्राइमरली एक जिप फाइल थी, अनजिप हुआ, एक तो आपका ये व्यू आ गया जो कि अगेन इज योर टैबलू वर्कबुक, एंड देन